श्रीनगर में मुनक्किदा 3 रोज़ा G20 इजलास कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। G20 के मंदोबीन ने श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और श्रीनगर के सयाहती मकामात के कुदरती हुस्न से लुत्फानंदोज हुए। श्रीनगर के मशहूर निशात गार्डन की सैर के दौरान रिवायती कश्मीरी कपड़ों में तस्वीरें लीं। निशात गार्डन में इन मेहमानों ने अपने मोबाइल फ़ोन से सेल्फियां लीं और मुगल गार्डन की खूबसूरती, आबशार और महकते फूलों से भरे रंग बिरंगे बाग के दिलफरेब नज़ारों को अपने कैमरों में कैद किया। मंदोबीन ने गोल्फ कोर्स में वक्त गुजारा और कश्मीर के बेमिसाल सुहाने मौसम में गोल्फ खेल का मजा लिया। इसके बाद मंदोबीन ने पोलो मार्केट का भी दौरा किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मंदोबीन ने डल झील, मुगल गार्डन, पोलो मार्केट और गोल्फ कोर्स में कश्मीर के मुनफरिद और सुहाने मौसम का मजा लेने के साथ साथ कश्मीर के अमन और खुशनुमा माहौल का भी मुशाहिदा किया। G20 मंदोबीन का कहना है कि G20 इजलास में कश्मीर की सयाहत, फिल्म, टूरिज्म, माशी और इक्तिसादी समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि कश्मीर सयाहत के हवाले से एक बेहतरीन जगह है। कश्मीर में सयाहत के अलावा भी मुख्तलिफ शोबों में वसी इम्कानात मौजूद है। इनका कहना है कि कश्मीर में ग्रीन टूरिज्म, इको स्पोर्ट्स के अलावा फिल्म साजी के लिए एक मुनफरिद और बेहतर गुंजाइश मौजूद है। Ramcharan is yes, the superstar. It was my and honor. that was so well choreographed. Yes. Wonderful. Thank you. So is this your first trip to Kashmir? Yes. I've been in India for about 10 months now, and this is my first time visiting Jammu Kashmir. First of all, RRR is not Bollywood, right? It's No, Tollywood. it's Tollywood. So I want to correct it. But we wanted to show that we Koreans and also staff at Korean Embassy have this huge love and respect for Indian culture. Jammu and Kashmir. Yes. I am in love with this nature, beautiful, clean, serene. And if I could, I would love to take some air, clean and fresh air, into my bag, back to Delhi. And one last. I mean, I don't know why Jammu and Kashmir is not yet well known around the world. So I hope many people can come visit here. What we saw outside of the meeting rooms, which is a garden, and it's lovely, beautiful. I think that the fact that you managed to do something, to keep something this beautiful and still keep the chinar trees is amazing. And you come from the land of football, you come from the land of Messi. A lot of students here, they are inclined towards football right now. So are you discussed sports as well here? We haven't so far, but we are very appreciative of India's support. I think this street is new. The renovation of this street is new. Correct. And I think it makes it very easy and very comfortable for tourists to come and look at different shops. And I think what they've done to this place is wonderful because it really showcases the history of the old part of Srinagar. I remember the rain and of course the wonderful mountains and the meadows and the beautiful Dal Lake and the warmth of the Kashmiri people. So you think Kashmir is changing for good? I think Kashmir is already a beautiful place in the first place, I don't know how it can get more beautiful. Oh, really good. I mean, we love to have more time just to stay a few days. So you should stay. Yes, why not? We're sightseeing a little bit more because, the program allows you to do what you have to do in terms of work. It's been really fruitful meeting here yesterday at the conference center. But yes, I mean, I have been witnessing that everyone is so anxious about what this area can offer for tourism, and I think the potential is really high. तो चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से